Rain is indeed one of the important factors of life on the earth, is mentioned in various verses of the Holy Quran, where sustainable information is given about the formation of rain, its proportion and effects. The fact that it was not possible for any of this information of the Quran shows us that the Quran is the word of Allah. Early interpretations regarding rain, floating, and mass. Land mass floated on a body of water, and the most of the water in rivers has its origin under the earth. Hebrew scholars observed that even though the rivers ran into the sea never became full. The wind goes toward the south and turns about into the north. It whirls about continuously, and the wind renews again to its circuits. Understanding of precipitation and prelocation. In the Adityadidam, a Hindu epic, it is mentioned that the sun heats up water and sends down as rain. Up to this time, it was wrongly assumed that the precipitation alone was insufficient to feed rivers for a complete water cycle, and that underground water pushing upwards from the oceans were the main contributors. Discovery of correct theory. Bernard Palissy, 1510 to 1589. He was the first to find out that rainfall alone was enough to maintain rivers. He stated that the water cycle includes evaporation and then condensation, then precipitation and last collection. Water cycle, condensation, precipitation, collection, evaporation, then again condensation. This cycle goes on. Formation of cloud and rain. The formation of rain takes place in three stages. The first one is the clouds are pushed by the wind. Clouds begin to fall, then wind pushes some small pieces of clouds to an area where these clouds converge. Joining, then the small clouds join together forming a larger clouds. Staking, when the small clouds join together, updrafts within the larger cloud increase. The updrafts near the center of the cloud are stronger than those near the edges. These updrafts cause the cloud body to grow vertically, so the cloud is staked. Quranic verses on the cloud formation and rain. Allahul Lazi Yusiluri, अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है तो वह हवाएं बादल उभारती हैं, फिर अल्लाह उस बादल को आसमान में जैसा चाहता है फैला देता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो तू देखता है कि इसके कभी बीच में से बारिश निकलती है, फिर जब अपने बंदों में से जिसे चाहता है उस तक वो बारिश भेजता है, जो जब भी वो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्स फ्रॉम द कुरान और उसका तर्जुमा इस तरह से है, वल्लाहुल्लज़ी अर्सल री, और अल्लाह ही है जिसने हवाएं भेजी तो वह हवाएं बादल को उभारती हैं, फिर हम इसे किसी मुर्दा शहर की तरफ रवां करते हैं, तो इसके सबब हम ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा फरमाते हैं। यूं ही हश्र में उठना है। एक और आयत है कुरान की जिसका तर्जुमा यूँ है, वरसलना रिहा लवाकिहा फ़अंज़लना मिनस्समा, और हमने हवाएं भेजी जो बादलों को पानी से भर देती हैं, तो हमने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने वो तुम्हें पीने को दिया और तुम इसके ख़जानची नहीं हो, और बेशक हम ही ज़िंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही वारिस हैं। एक और आयत है इसके रेफरेंस में, लम तरा अन्नल्लाह युज़्जी, क्या तुमने न देखा कि अल्लाह नरमी के साथ बादल को चलाता है, फिर उन्हें आपस में मिला देता है, फिर उन्हें तय दर तय कर देता है, तो तुम देखते हो कि उसके दरमियान में से बारिश निकलती है और वह आसमान में मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों से ओले उतारता है।
फिर जिस पर चाहता है उस पर उन्हें डाल देता है और जिससे चाहता है उससे उन्हें फेर देता है। करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंखें ले जाए। ग्राउंड वाटर इंटरप्रिटेशंस in the 7th century, Thales of Medes said that the spray of the ocean was picked up by the wind and it fell into the interior as rain. Discretes even as late as 17th century, it was believed that due to the pressure of the winds into the water, it fell into the interior as rain, and this rain water seeped into the soil and returned to ocean through secret passage, the abyssal, which was known at the time of Plato as Tartarus. Aristotle theory says was believed till as late as 19th century that water vapor evaporate from the soil. It condensed in mountain cavern and these mountain cavern form lakes which fed the spring water. Nature of clouds. Recent research क्या कहती है? According to recent research, thunder cloud can contain 500 tons of water. The weight of the precipitation that covers an area of 50 km to at a height of 1 centimeter is about half a ton. Chronic verses is who does show you the lightning by way both of fear and hopes. It is he who does raise up the clouds heavy with rain. Surah Al-Ra'd. Today, we know that the underground water is due to the seepage of the rainwater. The Holy Quran stated it 1400 years ago in Surah Al-Zumar. क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इससे ज़मीन में चश्मे बनाने, फिर इससे खेती निकालता है, कई रंगत की, फिर सूख जाती है तो तू देखे कि वो पहली पड़ गई, पीली पड़ गई, फिर उसे रेज़ा रेज़ा कर देता है। बेशक इसमें ध्यान की बात है अक्लमंदों को। एक और आयत है इसके रेफरेंस के लिए, और इसकी निशानियों में से है कि तुम्हें डराने और बारिश की उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से पानी उतारता है तो इसके ज़रिए ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। टुडे वी नो दैट द अंडरग्राउंड वाटर व्हाट कुरान सेज अबाउट क्लाउड। और वही है, इस यहाँ पर एक आयत का तर्जुमा इस तरह से दिया है, सूरह अरफा आयत नंबर 57। और वही है जो हवाओं को इस हाल में भेजता है कि उसकी रहमत के आगे आगे खुशखबरी दे रही होती है, यहाँ तक कि जब वह हवाएं भारी बादल को उठा लाती हैं तो हम इस बादल को किसी मुर्दा शहर की तरफ चलाते हैं, फिर इस मुर्दा शहर में पानी उतारते हैं तो इस पानी के ज़रिए हर तरह के फल निकालते हैं। इस तरह हम मुर्दों को निकालेंगे। ये बयान इसलिए है कि ताकि तुम नसीहत करो। एक और आयत है इसके रेफरेंस के लिए सूरह मोमिनून से, और हमने आसमान से एक अंदाज़े के साथ पानी उतारा, फिर उसे ज़मीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ रेन। Recent scientists discovered that the earth-water cycle is balanced. This means that the amount of that evaporate from the earth equals the annual precipitation that falls into the earth. Precipitation is everything falling from clouds, including rain, snow, hail, and drizzle. The annual precipitation is estimated at 990 millimeters, which is unbalanced with the total amount of water, evaporated water. Therefore, water is continuously circulating in a balanced water cycle. If the water cycle is stopped or got disrupted, natural water sources will be contaminated with plants and after some rainfall would stop, leading to the end of the life on earth. Global water balance volumetry. Quranic verses on rain measurement. In the Holy Quran, more than 1400 years ago, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty mentioned that water is sent down in a
do measure, indicating a specific amount of water that is required for the water cycle. इसके रेफरेंस में एक आयत इस तरह से दी गई है और उसका तर्जुमा यूँ है, और वो जिसने एक अंदाज़े से आसमान से पानी उतारा तो हमने उससे एक मुर्दा शहर को ज़िंदा फरमा दिया, यूँ ही तुम निकाले जाओगे। एक और आयत है यहाँ पर, इसने आसमान से पानी उतारा तो नाले अपने अपने गुंजाइश की बकदर बह निकले, तो पानी की रविश पर उभरे हुए झाग उठा लाई और ज़ेवर या कोई दूसरा सामान बनाने के लिए जिस पर वो आग दहकाते हैं, इससे भी वैसे ही झाग उठते हैं। अल्लाह ताला इस तरह हक़ और बातिल की मिसाल बयान करता है तो झाग तो ज़ाया हो जाता है और वो जो लोगों को फ़ायदा देता है वो ज़मीन में बाकी रहता है। अल्लाह यूँ ही फरमाते हैं और यूँ ही मिसालें बयान फरमाते हैं। थैंक यू।